ठीक है, ये डोरमेट्री वाले रूम हैं, इस तरीके के रूम्स होते हैं। मैंने गोवा में भी लिए थे या पौंडीचेरी में भी लिए हैं, बहुत अच्छा मतलब यहाँ का स्टे है। और तो मैं यहाँ का स्टे भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी बहुत देर में। पहले कुछ लोकेशन एक्सप्लोर करने चलते हैं आउटसाइड, क्योंकि पौंडीचेरी जो है ना वो बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। तो दिखाता हूँ, ये भी साउथ इंडिया में ही है, तो देखना। चेरी में मेरे पास ये वाली स्कूटी है, कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं। No, I have. No, no, no. Singing, Lord, kumbaya. Oh, Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord, kumbaya. गाइज़ मैंने अकेले ही सारी वीडियो शूट कर ली है और बीच पे अभी मेरे को सब देख भी रहे थे यार, क्या बताऊँ, बहुत लोग देखने लगते हैं। तो इससे मैंने वीडियो बनाई है, सेल्फी स्टिक भी बन जाता है, ट्राइपॉड भी बन जाता है। और देखो क्या लोकेशन है। Pack my bags at the break of dawn, chasing a dream where the rivers run long.
through the pines and the mountain snow. I'm headed north where the wild winds blow. Alaska, you're the fire in my chest, the call of the wild that won't let me rest. Through the silence, the ice and the flame, I'll find my soul when I whisper your name. The road is rough, but my spirit is strong. Every mile sings a wandering song. भाई एक चीज़ दिखाऊं? तो गाइज़ अभी ना मैं पौंडीचेरी में हूँ और कसम से पौंडीचेरी इतनी ज़्यादा अच्छी मुझे जगह लगी। मतलब यार तुम्हें क्या बताऊँ, गोवा होता है ना, गोवा जैसे गोवा है बिल्कुल उसी के जैसा सिमिलर काफ़ी सारी चीज़ें थी। बस वो बात अलग थी कि थोड़ी पार्टियाँ वगैरह नहीं चल रही थी जैसे मतलब चलती है पौंडीचेरी में भी अभी चल रही होगी। मैं यार गया नहीं क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और वैसे भी मैं क्लबिंग वगैरह तो करता हूँ नहीं। बीचेस वगैरह पे जाना था तो मैं बीचेस घूम कर आ गया और एक दो जगह और जानी थी, मतलब जो भी फाउंट मतलब वो वॉल स्ट्रीट थी, मतलब वाइट टाउन था और फ्रेंच कॉलोनीज जो थी वहाँ पे घूम के आ गया मैं आराम से। मेरा तो एकदम बढ़िया हो गया, जहाँ जहाँ मुझे जाना था मैं वहाँ घूम कर आ गया। इससे पहले टेंपल भी गया था और मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेरी ट्रिप रही। और अब ये देखना अभी आगे कहाँ जाते हैं, मैं यहाँ से कल चेकआउट कर दूँगा। और व्लॉग में यार बने रहना कृपया करके, यार आप वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप लाइक करते हो ना तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। देखो यार मैंने यार अपनी एक बहुत छोटी सी चीज़ बताता हूँ। पहली बात तो मैं शादी वगैरह करना ही नहीं चाहता बिल्कुल भी, है ना। और अगर मैंने करी तो भाई ऐसी लड़की से ही करूँगा भाई जिसको ट्रैवलिंग वगैरह करने का बहुत ज़्यादा शौक हो, बिल्कुल मेरी तरह उसको शौक होना चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि मतलब कहीं पे भी ऐसी मनाली शिमला बोल रही है भाई, वो तो कुछ भी नहीं होता है यार। मनाली शिमला तो एरा बहुत पास में है। मतलब उसके कुछ ड्रीम्स हो यार ट्रैवलिंग को लेके, ऑब्सेस हो ट्रैवल को लेके, जैसे मैं हूँ। सारा सब चीज़ें छोड़ छाड़ के ना मैं ट्रैवलिंग में लग गया हूँ। मैंने ये नहीं सोचता मैं पैसे अपने इस तरीके से उड़ाता हूँ, ऐसा मतलब जितने भी पैसे होते हैं मेरे पास मैं इस तरीके से खर्च करता हूँ ना कि मतलब फ्यूचर के लिए कुछ नहीं, अभी बस अच्छे से हो जाए जो हो रहा है। Build my dreams on fragile stone, a monument to stand alone.
but nothing answers, nothing replies. My vain words, my broken stride, etched in silence, lost in time, all the pieces I tried to save, scattered dust on an empty grave. My vain words. Pages torn